Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher Kainat. How are you? I hope you are enjoying this life. Today we are going to learn our fourth chapter of science. Unit number 12. Electricity, conductor and insulator. Students, आज हम conductor और insulator के बारे में जानेंगे. Conductors क्या हैं और insulators क्या है. The material which allows electricity to pass through it is called a conductor. All metals, iron, brass, copper, silver and gold, etc. are conductors. वो मौद जिनमें से करंट को बिजली को गुजरने की इजाजत होती है उसे कंडक्टर्स कहते हैं. All metals, धात, iron, brass, copper, silver and gold, etc. are conductors. Iron, brass, copper, silver and gold conductors की मिसालें हैं. The material which does not allow electricity to pass through it is called insulator or non-conductors. वो मौद जिनमें से बिजली को गुजरने की इजाजत नहीं होती इसे इंसुलेटर कहते हैं और नॉट कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स नहीं हैं. वुड, रबर, ग्लास एंड पेपर आर इंसुलेटर्स. वुड, रबर, ग्लास एंड पेपर इंसुलेटर्स हैं और नॉन कंडक्टर्स वो ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं हैं. यू आल्सो रीड विद मी कंडक्टर्स and insulator. The material which allows electricity to pass through it is called a conductor. All metals, iron, brass, copper, silver and gold, etc. are conductors. The material which does not allow electricity to pass through it is called insulator or non-conductor. Wood, rubber, glass and paper are insulator or non-conductor goods. Let us see what are dictation words today. Note down these words on your notebook. Material, electricity through conductor, metal, copper, silver, gold, brass, iron, wood, rubber, glass, paper, insulator. स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड करेंगे. व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर. स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन व्हिच वी आर गोइंग टू रीड टुडे. व्हाट इज कंडक्टर. देयर इज अ आंसर ऑन द स्क्रीन. The material which allows electricity to pass through it is called a conductor. There is a next question on the screen. What is insulator? There is the answer on your screen. The material which does not allow
insulator और non-conductor। स्टूडेंट्स, जो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आपने अपनी नोटबुक पर नोट करना है और इनको होमवर्क करके इनकी पिक्चर लेकर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। We will see you in the next lecture.